welcome to Conversation with Oziva, your go-to podcast for all things health and nutrition. Today we are sitting with Miss Preeti Gupta, who happens to be Delhi's leading nutritionist, wellness coach and dietitian. Welcome Preeti to our show. We're so glad that you could take out the time and आज आप हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Thank you, Chaya. It's my pleasure to be here. Preeti, first I would like to ask you. Yeah. Of course, आज हम weight loss की बात करें and we're talking about an informed consumer, somebody who's mindful of their fitness, wellness, and of course nutrition as well. So Preeti, beginning with our conversation, what do you think is the right way to go in terms of nutrition, eating habits, and especially diet control for weight loss management? Yeah. So this is a very hot topic. We all know that weight management and weight loss is always in demand. So all people are just careful about their health. So अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ. The thing is, the people think कि वो आप कुछ भी जो होता है ना drastic diets करके and they want to lose weight very fast. So that is not a good approach to do that. So what one should do is that they should have a healthy lifestyle. तो जब तक अपनी लाइफस्टाइल को वो चेंज नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई सुधार नहीं आ सकता. तो व्हाट दे शुड डू इज़ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि डाइट का पैटर्न जो है दे शुड रेगुलेट दैट. तो दैट मीन्स टाइमिंग शुड बी देयर कंट्रोल टाइमिंग्स एंड जो आपका मील्स है दैट शुड बी ऑलवेज कंट्रोल्ड एंड बैलेंस्ड. तो बैलेंस्ड डाइट की जब हम बात करते हैं तो आता है हमारा सारे जो फूड ग्रुप्स हैं, सब न्यूट्रिशन है, एवरीथिंग इज़ कंबाइंड. तो हम किसी को भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं कर सकते. और साथ में इसके साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और सिर्फ आप डाइट ही करते जा रहे हैं तब भी क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में सैगिंग आने लग जाती है और उसकी वजह से भी जो आपका वेट लॉस हुआ भी है तो आपके रिंकल्स आने की वजह से वो आपका और ज़्यादा पूरी बॉडी पे ही कहीं ना कहीं इफेक्ट देता है और आपके स्किन पे भी ग्लो नहीं आता. तो इसीलिए हमें एक ओवरऑल अप्रोच के लिए जाना चाहिए, होलसम अप्रोच. तो स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द डाइट, आर देयर एनी पर्टिकुलर फूड आइटम्स दैट यू वुड रेकमेंड और यू वुड आप कहोगे कि you know we can eat everything and anything that we have but in limited portions? What would your advice? The first thing is the limited portion. That is a portion control is a basic thing that everyone should have control on this. And second important thing is all food groups are important. So it is not कि आप fat नहीं खाओगे, कि आप carbohydrate नहीं खाओगे, because this is what I have seen is that keto diet which is very fat diet which is being there and वो बहुत लोग follow करने लग गए हैं और उसका उनको ये नहीं पता कि side effects कितने हैं. Because the thing is when you are eating too much of fat and little protein and no carbs तो वो आपका कहीं ना कहीं जाके आपके organs को ही इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है. तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको लेना भी है, सपोज किसी के घर में मैरिज है, they want to lose weight और आपको 1 month में आपको लूज़ करना है तो you can go for थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट but it should not be a complete no to anything. तो एक लिमिटेड अप्रोच ज़रूरी है. बट कार्ब्स, आई विल से दैट कि कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, देन प्रोटीन्स हैं, फाइबर, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप उसको करेक्ट वे में ले रहे हैं देन इट इज़ द बेस्ट अप्रोच दैट वी शुड फॉलो. इट्स सो इम्पॉर्टेंट स्पेशली कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, क्योंकि आई थिंक व्हेन वी वांट टू स्टार्ट लूजिंग वेट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, चाहे आप हेल्थ के लिए कर लो, चाहे आप शादी आ रही है उसके लिए कर लो, टू ईच देयर ओन. आई थिंक वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. आई थिंक वहाँ पे हम गलती कर देते हैं. So important that an expert is helping us with this. Preeti, when we come to the kind of food groups or food items that actually help with weight loss management and particularly weight loss, what do you suggest in terms of which food groups should we focus on and why do they help us particularly? Yeah, when we say that we should focus on some food groups, that is not the correct idea. I'm saying that every food group should be important and included in our diet. But most food groups are like your fruits and vegetables, the vitamins and minerals. That should be plenty of this in your diet. So when you are taking a diet, you should include these at least 2 to 3 servings of fruit and vegetables separately in your diet in daily routine. And then you can include your carbohydrate, fat and protein. But like fat you can limit it like 2 to 3 teaspoon per day, and you can have the servings of your protein also like 2 to 3 servings in a day. But carbs can be reduced, but at least 2 servings of carbs should be there. Otherwise the diet will again be imbalanced. Okay, and when you talk about 2 servings of carbs, so what would you recommend in that? Like it can be multigrain roti, it can be rice also, brown rice, or it can be your this thing oats hai, then you have bajra also, ragi also. So these type of complex carbohydrates are there in the market, so you can easily use them. But try to avoid like your white rice and your wheat, whole wheat में जब आपका मैदा आता है जो आप कहते हैं उसको हमें आई थिंक यू नो व्हाट आई फाइंड रियली फैसिनेटिंग कि ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं. यू नो हमें कभी कभी लगता है कि मे बी
हमारे पास provisions है नहीं, or we might not know exactly where to procure the right kind of food from. This is very important that they actually are accessible. You should just know how to consume them and use them. I think next question would be, हम सबको ना एक बहुत गलत फहमी रहती है कि सारा फैट बुरा होता है. So, of course, I think fat is something which is also healthy as well. But I think we have this misconception that all fat is bad. What is your take on that? Fat is not at all bad, but if it is taken from the refined sources, like if you are taking your vegetable oils, too much of ghee, then it is bad. If you are taking in a limited amount, like 2 to 3 teaspoons, I'm telling you, that is perfectly all right when you're taking in a whole day. So you should not avoid the fat, and olive oil is good. Your ghee is very good because they are rich in vitamin E. So when you are taking vitamin E, that is again you are lubricating your body. Otherwise your skin will be dry. So how will you manage your skin and other problems of your organs? So that's why constipation also happens if you don't take fat at all, because of the dryness in the internal organs also. So that is a major problem. Okay, so fascinating. I think इस misconception को correct करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने लोग आप बातचीत में सुनते हो, बहुत लोग बोलते हैं नहीं फैट बुरा है, फैट बुरा है, बट हम उसके हेल्थ बेनिफिट्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं. आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन प्रीति आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, आजकल फैट डाइट्स जो होती हैं, फैट ट्रेंड्स बहुत प्रेवलेंट हो गए हैं. यू नो, वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव वैरायटी ऑफ सोर्सेज जो हमें बताते हैं कि ये ट्राई करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट. व्हाट इज योर टेक ऑन फैट डाइट्स फर्स्ट? सेकंड इज, शुड वी फॉलो देम? And if we are actually following them, what is the recommendation from an expert in terms of हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? Okay, first of all, the fat diets, they are not bad, but the thing is that when they follow it for a longer time of period, then it is affecting your body in such a bad system. So what happens is, अगर आप कीटो डाइट की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि it has too much of fat in the body, तो अगर आप बॉडी में फैट इतना ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपका लिवर जो है वो धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट करना बंद कर जाएगा, तो फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. देन किडनी में भी आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं. अब जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, so it is not at all bad, but again for a longer period of time it should not be followed, because the thing is कई लोग intermittent fasting को 16 to 8 is the best window which you can easily follow it, but otherwise अगर आप उसको 4 hours जब खाते हो और again आप बाकी टाइम आप फास्टिंग पे रहते हो, that is really bad for your body, क्योंकि वो आप उसको ड्रास्टिक वे में ले जाते हो. तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. तो हमें फैट डाइट्स नहीं लेनी चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच पे ही जाना चाहिए, क्योंकि वही आपका आराम से आपका वेट लॉस भी करेगा और आगे भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जब करोगे तो वो वेट गेन होने में हेल्प नहीं करेगा कि बाद में आपका वेट गेन हो लॉस करने के बाद. No, I think this is something which is so important. One more thing, Preeti, इसी से मुझे एक और सवाल आया. As I said, अब हमारे पास इतने multiple sources होते हैं. You know, we have information through the internet. We can do a Google search easily. ज़रूरी नहीं है कि वो verified हो. और of course, WhatsApp forwards का तो ज़माना है. You know, fake news के बारे में हम कितनी बात करते हैं. I wanted to know, is it fine to follow these fat diets, especially if they're not coming from an expert, या फिर हमें एक, जैसे हम दवाई लेने से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, should we go to an expert and should we only follow an expert? What would your advice be to our viewers and that is very true, because what happens is कि जब लोगों को दिखती है कि कोई भी डाइट आई है और they started following it, वो नहीं पता कि वो बॉडी को सूट करेगी या नहीं करेगी, because they have multiple problems. अब हमारी जो बॉडी है उसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती है. कईयों को थायराइड की प्रॉब्लम है and they start eating cruciferous vegetables like आप ब्रोकली वगैरह, तो वो उन्हें पता ही नहीं है कि वो उसके लिए कितना हार्मफुल है. तो वो आपको तभी पता चलता है जब आप किसी एक्सपर्ट से जाके आप उसके बारे में पूछते हैं. तो you should always consult an expert for this knowledge, because if you don't know and you are following anything blindly, that will not help at all. ये आपको कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर सकता है. तो it should not be done. I think हम इस बात को ना हम बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं. One, that not every particular solution fits every body. That's true. सबकी body type अलग होता है, सबकी body requirements अलग होती है. And if you try to, अगर आपने कोई भी information कहीं से ली है, if you apply to your own self, it might not actually suit you. It could actually be harmful for you as well. That's very true. Preeti, this is so important कि हमने आज ये जो आपसे बात करी है. So helpful. I think especially because these tips are coming from an expert. I'm sure they're going to benefit all our viewers and listeners. Thank you so much for taking all the time. That's a pleasure being with you, Chaya. So thank you very much. No, thank you.